Hey future doctors, welcome to Dentistionary. Here you will be provided with information for the doctors from the doctors. Today's topic is amelogenesis. So let's start without wasting any time. On the basis of ultrastructure and composition, two processes are involved in the development of enamel. These are different from the life cycle of ameloblast. These are thoroughly explained explanation of the formative and maturative stages. The first one is organic matrix formation and then the mineralization of the enamel. So let's continue. First of all, the organic matrix formation. In this, first of all, the secretive activity of ameloblast begins, जिसमें prismless enamel along the DHA form होने लगता है. They begins the secretory activity when a small amount of dentine has been laid down and the ameloblast lose the projections that had penetrated the basal lamina, separating them from the predentine, and islands of enamel matrix are deposited along the predentine. Prismless enamel is deposited along the dentine-enamel junction. As enamel deposition proceeds, a thin continuous layer of enamel is formed along the dentine, and then amelogenin plays a very important and major role in the enamel matrix proteins, which undergo extracellular degradation by proteolytic enzymes like matrix metalloproteinases into smaller low molecular weight fragments like tyrosine and leucine. Okay, and then the polypeptide, which are suggested to have specific functions in the regulating growth crystals. Okay, then appearance of Tom's process and formation of distal terminal bars. Tom's process क्या होता है? Tom's process are the projections of ameloblast into the enamel matrix have been named Tom process. Okay, it was once believed that these processes were transformed into enamel matrix, but more recent electron microscopic studies have demonstrated that मैट्रिक्स सिंथेसिस और जो सिक्रीशन ऑफ अमीलोब्लास्ट होता है वो काफ़ी सिमिलर है सेम प्रोसेस टू द सेम प्रोसेसेस अकरिंग इन अदर प्रोटीन सीक्रेटिंग सेल्स ऑल्दो जो टोम्स प्रोसेसेस होते हैं वो आर पार्टली डिलिनिएटेड बाय इनकम्प्लीट सेप्टा and they also contain typical secretion granules as well as rough endoplasmic reticulum and mitochondria. Okay, junctional complexes होते हैं which encircle the ameloblast at the distal and proximal ends have fine radiating actin filaments extending into cytoplasm जो फॉर्म करते हैं वेब्स को एक तरह से जंजाल होता है जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस का जो अमीलोब्लास्ट के कंसेंट्रिक रिंग्स में आ जाते हैं उनके डिस्टल और प्रॉक्सिमल एंड्स पे जो फाइन रेडिएटिंग एक्टिन के फिलामेंट्स होते हैं जो एक्सटेंड करते हैं साइटोप्लाज्म में. ओके, these serve to control the substances that pass between ameloblast and enamel. ameloblast और enamel में ये कनेक्शन बिठाते हैं, ठीक है. The junctional complexes which form at the distal end are called distal terminal bars. और ये terminal bars separate करते हैं Tom's processes को from the cell proper से. Okay, now the extracellular degradation of amelogenin protein by MMP into nanosphere between the crystals formed. The secretion from these areas close to junctional complexes and from adjacent ameloblast form the interrod enamel. Interrod enamel बनाते हैं ये लोग. तो एक्स्ट्रासेलुलर डिग्रेडेशन हो जाता है उसके जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था स्मॉलर लो मॉलिक्यूलर वेट फ्रैगमेंट्स का वहाँ मेटालोप्रोटीनेसिस में मैट्रिक्स की तरह मतलब इट अंडरगोज द एक्स्ट्रासेलुलर डिग्रेडेशन यू नो बाय द प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स. ये किस वजह से होता है? प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से, जिसका जैसे एग्जांपल में मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसिस MMP इनटू स्मॉल लो मॉलिक्यूलर वेट फ्रैगमेंट्स या नैनोस्फेयर्स कह सकते हैं बिटवीन विच क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं. ये कौन से तरह के प्रोटीन्स हो सकते हैं? टायरोसिन रिच अमीलोजेनिन या ल्यूसिन रिच अमीलोजेनिन जो रेगुलेट करते हैं क्रिस्टल की ग्रोथ को. ओके, ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं विच आर सजेस्टेड टू हैव स्पेसिफिक फंक्शंस.
मैनी आइसोफॉर्म्स जो होते हैं अमीलोजेनिन्स के वो प्रोड्यूस करते हैं विद सिमिलर टर्मिनल अमीनो एसिड सीक्वेंस, बट उनका डिफरिंग सीक्वेंस इन द सेंट्रल प्रोटीन्स ऑफ द मतलब सेंट्रल पोर्शंस ऑफ द प्रोटीन की वजह से वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, उसमें बीच में थोड़ा सा डिफरेंट प्रोटीन्स के सीक्वेंसेस होते हैं। उसके बाद अमीलोब्लास्टन और एनामेलिन और भी ज़्यादा जो दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स में से एक है एनिमल मैट्रिक्स की, दे ऑल्सो अंडरगो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेसिंग, डिग्रेडेशन इनका भी होता है लाइक अमीलोजेनिन, बट एक रैपिड रेट का होता है। देयरफॉर द टाइम फॉर इंटरेक्शन बिटवीन नॉन अमीलोजेनिन एंड अमीलोजेनिन लिमिटेड रहता है। अमीलोब्लास्टन एंड एनामेलिन ऐसा माना जाता है टू हेल्प इन द न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स, ओके। और उसका जो टफ्टेलिन होता है ऑन द अदर हैंड is localized to DEJ and is suggested to be involved in cell signaling, ठीक है। Experimentally, in the absence of ameloblasting, no structural layer of enamel formation is observed. Then again, the crystals secreted and finally a keyhole pattern of rods achieved. 4 ameloblasts together form one rod and parts of 4 rods from one ameloblast. इसका क्या मतलब है? जो क्रिस्टल्स हैं वो सीक्रेट करते हैं एंड फाइनली एक की होल पैटर्न बनाते हैं, मतलब ऑफ रॉड्स का, जैसा कि हमने पढ़ा था पहले वीडियोस में। उनका अचीव होता है की होल पैटर्न। 4 अमीलोब्लास्ट टुगेदर मिलके एक रॉड बनाते हैं और 4 रॉड मिलके एक जो पार्ट्स ऑफ 4 रॉड्स है वो एक एक अमीलोब्लास्ट से जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद जो अमीलोब्लास्ट कवरिंग मैच्योरिंग एनेमल, उनको अगर लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाता है तो वन कैन सी दैट द अमीलोब्लास्ट कवरिंग द मैच्योरिंग एनेमल आर कंसिडरेबली शॉर्टर देन द अमीलोब्लास्ट ओवर इनकम्प्लीटली फॉर्म्ड एनेमल। तो क्रिस्टल्स ग्रो होते हैं, मैच्योरेशन अकर होती है, अमीलोब्लास्ट शॉर्ट हो जाते हैं और अंडरगो करते हैं एपोप्टोसिस बाय 50%, तो वो 50% छोटे हो जाते हैं। सेवरल सब स्टेजेस आइडेंटिफाई करी जा सकती हैं इन द ट्रांजिशन ऑफ अमीलोब्लास्ट फ्रॉम द फॉर्मेटिव टू द मैच्योरेटिव स्टेज। तो द चेंजेस अकरिंग इन द अमीलोब्लास्ट आफ्टर सीक्रेटरी स्टेज, जो हमने सीक्रेशंस पढ़े थे पहले, एंड प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ मैच्योरेशन जो अभी हम पढ़ेंगे, इसको हम ट्रांजिशन स्टेज पढ़ते हैं जो अभी चल रहा है। इस स्टेज में अमीलोब्लास्ट रिड्यूस इन हाइट, एनेमल सीक्रेशन स्टॉप्स कम्प्लीटली एंड प्रोसेस ऑफ अमीलोजेनिन रिमूवल स्टार्ट्स। About 50% of ameloblasts undergo apoptosis. The organelles involved in protein synthesis undergo autophagocytosis. Then जो अमीलोब्लास्ट होते हैं वो डिपॉजिट करता है एक बेसल लमाइना को जो अडेयर करती है एनिमल सरफेस से, एंड जो अमीलोब्लास्ट अटैच होता है टू द बेसल लमाइना को, वो किस वजह से अटैच होता है? वो होता है हेमीडेस्मोसोम्स की हेल्प से उसमें अटैच होता है। अमीलोब्लास्ट अल्टरनेट्स cyclically in developing smooth and ruffled borders in the apical cytoplasm. तो अमीलोब्लास्ट अल्टरनेट करता है साइक्लिकली बिटवीन स्मूथ एंड और रफल्ड एंड के बीच में, ओके। तो इसमें क्या होता है, जो रफल्ड बॉर्डर्स होते हैं और जो स्मूथ होते हैं इन द अपाइकल साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग द मैच्योरेटिव स्टेज इन अ सर्वाइको इंसाइजल डायरेक्शन। सर्वाइको इंसाइजल means from the cervical line to the incisal line. These changes are referred to as modulation. The modulation between the two forms occurs many times in a day, in every 5 to 7 hours sometimes. The period of maturation is much longer, about twice or thrice than the secretory phase. जो ruffled end होते हैं, ruffled ended ameloblast, वो villous surface होता है उनका, काफ़ी villous surface packed with mitochondria. They have proximal junctions, leaky and distal junctions, tight, while the arrangement is just the opposite in the smooth-ended. Ruffled border with villi absorb करते हैं मैट्रिक्स को, सीक्रेट करते हैं कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट आयंस। 90% ऑफ प्रोटीन मेनली अमीलोजेनिन लॉस्ट हो जाता है। तो जो रफल्ड एंडेड अमीलोब्लास्ट होते हैं shows numerous lysosomes and possess endocytic activity. They also promote calcium entry into the forming enamel. The smooth-ended ameloblasts have little endocytic activity but leak small proteins and water into the forming enamel. They do not show calcium pumping activity. Calcium ions pass करते हैं actively through ruffle-ended ameloblast and passively through the sides of the smooth-ended ameloblast. Okay. So the ruffled border वो
हेल्प करता है टू कीप द मिनरलाइजेशन प्रोसेस टू कंटिन्यू. ओके, नाउ द मिनरलाइजेशन. इसमें 2 स्टेजेस होते हैं मेनली. स्टेज 1 में इमीडिएट पार्शियल मिनरलाइजेशन इन द मैट्रिक्स सेगमेंट, नो अनमिनरलाइजेशन मैट्रिक्स लाइक अदर हार्ट टिश्यूज. इसमें कोई भी मैट्रिक्स वेसिकल ऑब्जर्व नहीं की जा सकती है एनिमल फॉर्मेशन में. एंड कोई भी अनमिनरलाइज्ड मैट्रिक्स लाइक प्रीडेंटिन या ऑस्टियोइड इज सीन ड्यूरिंग एनिमल फॉर्मेशन. देयरफॉर जो एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं वो प्रीफॉर्म नहीं होते हैं. व्हेन दे आर रिलीज्ड बाय द सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स दे आर नॉट प्रीफॉर्म्ड. न्यूक्लिएशन is initiated by the apatite crystals of dentine on which enamel is laid. इनके ऊपर enamel की एक लेयर डिपॉजिट होती है ओके एपेटाइट क्रिस्टल्स पे. केमिकल एनालिसिस में देखा गया है इंडिकेट करता है दैट द इनिशियल इन्फ्लक्स में अमाउंट टू 25 to 30% ऑफ द इवेंचुअल टोटल मिनरल कंटेंट. The nucleation is initiated by apatite crystals. 25 to 30% of mineral components seen in the form of crystalline apatite. Then this stage 2, इसमें maturation की भी stage कह सकते हैं, characterized by gradual completion or of mineralization. So the maturation and completion of mineralization 96% due to crystal growth. Maturation begins before matrix reaches full thickness. So the process of maturation starts from the height of the crown and progresses cervically. However, at each level, maturation seems to begin at the dentinal end of the rods. Dentinal end से हमेशा शुरू होता है. Thus, there is an integration of two processes. Each rod matures from the depth of the surface, and the sequence of maturing rods is from cusp or incisal edge towards the cervical line. Then maturation begins before the matrix has reached its full thickness. Thus, it is going on the inner first formed matrix at the same time as initial mineralization is taking place in the outer recently formed matrix. ये मोस्टली पहले इनर में हो रहा होता है फर्स्ट फॉर्म मैट्रिक्स में, और उसी के सेम टाइम पे फिर इनिशियल मिनरलाइजेशन हो जाता है टेकिंग प्लेस इन द आउटर रिसेंटली फॉर्म्ड मैट्रिक्स में. And the crystals increases in size from 1.5 to 25 micrometers या म्यूमीटर्स during the maturity phase. Taftalin एक acidic enamel protein है, तो localized to the dentine enamel junction has been reported to participate in the nucleation of enamel crystals. Outer enamel proteins regulate enamel mineralization by binding to specific surfaces of the crystals और inhibit करता है further deposition को, उससे ज़्यादा deposit नहीं होने देता है वो. The rate of formation of enamel is 4 micrometer per day. Therefore, to form a layer of enamel of 1 millimeter thickness, it would take 240 days. The rate of enamel formation is more in permanent teeth than in deciduous teeth. The crystal size increases further after tooth eruption due to ionic exchange with saliva. Here is a schematic representation of the amelogenesis from the life cycle of ameloblasts. The cells of the internal enamel epithelium starts to differentiate in the first one, beginning at the future enamel dentine junction of the cusp tip. Cusp tip पे होता है. उसके बाद जो differentiating cells हैं वो characterized by reversal of polarity, एक साइड चला गया है वो. And the cell becomes columnar and the nucleus moves to the part of the furthest from the dentine. So here the basal lamina is the red line one. This one is basal lamina here. Okay. Then the endoplasmic reticulum are here. Okay. Then the mitochondria are here. Then Golgi apparatus here. Then secretory vesicles and absorption granules. Secretory vesicles are here, the blue circles, and जो absorption granules है वो ये हैं orange circles. उसके बाद प्राइमरी एनिमल क्यूटिकल जो इस साइड है. डेंटिन द क्रॉस स्ट्राइएशंस लाइक दिस. देन द डॉटेड वंस आर, इधर जो डॉटेड है इनिशियल एनिमल मैट्रिक्स फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके बाद ये एनिमल क्रिस्टलाइट्स हैं इधर. ओके, सो
सबसे पहले कॉलमनार हुआ, न्यूक्लियस मूव हुआ, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हुआ, देन सिक्रेटिंग ऑर्गेनल्स जो होते हैं आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द सेल एडजेसेंट टू द डेंटिन, बिकम्स द साइट फॉर सिक्रीशन, वो साइट फॉर सिक्रीशन बन जाता है. At the next stage, the cell secretes the initial enamel component, which of the enamel dentine junction. This thin layer will be continuous with the inter-rod enamel of the later formed tissues. As the cell surfaces of the process, as the cell retreats, the secreting pole becomes morphologically distinct as a pyramidal Tom's process occurs here. एक पिरामिडल टॉम्स प्रोसेस जिस तरह से इसमें दिखाई दे रहा है अकर हो जाता है यहाँ. सबसे पहले इसमें रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हुआ था, उसके बाद इन्होंने सीक्रेट करना किया शुरू, एक सीक्रेट साइट बन गई यहाँ डेंटिन के पास जो सिक्रीशन चालू कर दिया जिसके बाद थर्ड स्टेज में जो सेल है सीक्रेट करता है द इनिशियल एनामल कंपोनेंट, जैसा कि इसमें डॉटेड लाइन में दिख रहा है यहाँ थर्ड स्टेज में. उसके बाद वो आगे दिस थिन लेयर will be continuous with the inter-rod enamel of the later formed tissues. वो inter-rod enamel के साथ continuous होता है. As the cell retreats, the secreting pole becomes morphologically distinct as a pyramidal Tom's process. In the fourth A part, pyramidal Tom's process, क्रिस्टलाइट फॉर्म हो जाते हैं नीचे, दोनों के नीचे दिख रहे होंगे आपको, इन दोनों में ही क्रिस्टलाइट्स फॉर्म होते जाते हैं और आगे भी ये कंटिन्यू करते हैं. ओके, देन form at both of the surfaces of the processes, the proximal region between two processes deep in the junctional region. उसके बाद जो उसका रीजन होता है always secretes ahead of the more distal region so that जो पिट्स उसको सराउंड करती हैं इंटर रॉड एनेमल को वो फॉर्म हो सकें. उसके बाद देन फिल्ड एंड उसको एक प्रिज्म कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है टिश्यू को. ओके, then the simultaneous secretion of both organic and mineral continues until the full thickness of the tissue is formed. इसमें in this secreting phase, two appearances of ameloblast can be distinguished by the position of the nuclei within the cell. High nuclei मतलब इसमें आप देख सकते हो किस तरह से high in a 4A and low in a 4B, as you can see the stage of nucleus. At the beginning of secretion, half the cells are in each form. Towards the end of secretion, most of the high nuclei have moved to a low position, effectively increasing the areas of the ameloblast cells as the surface of forming enamel increases. जो surface forming enamel सबसे पहले जब ये स्टार्ट होता है तो हाफ द सेल्स आर इन ईच फॉर्म, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सिक्रीशन मोस्ट ऑफ द जो हाई न्यूक्लियाई हैव मूव टू अ लो पोजीशन, इफेक्टिवली जो इंक्रीज करता है एरियाज ऑफ अमेलोब्लास्ट सेल्स को एज द सरफेस ऑफ फॉर्मिंग एनेमल इंक्रीजेस. व्हेन द फुल थिकनेस ऑफ एनेमल हैज फॉर्म्ड, ameloblast lose the secretory extensions. Okay, the pyramidal Tom's granule is lost and the microvilli appears. Up to 50% of them die and are phagocytosed by other in the layer. The maturation phase lasts 2 to 3 times more longer than the secretory phase. Okay, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था. During the maturation phase, there is regular repeated modulation of the cell morphology between a ruffled end and a smooth end. The 5A and the 5B. As you can see in the 5A, there is microvilli at the bottom. Once जब maturation changes ख़त्म हो जाता है, complete हो जाता है maturation, तो cell regress करता है height में. At this stage, the last stage जो है, they serve to protect the enamel surface during eruption and later will contribute to form the junctional epithelium, which protects it from anomalies during eruption and it helps in the eruption. Thank you so much. I hope you found this video informative. If you found it confusing, please comment down below. We will try to solve it as soon as possible. And if you have any queries or doubt about this video, you can ask in the comment box. If you want the PPT, follow the link below. If you want to study it thoroughly, read Auburn's for this, and for the simplification you can ask about another video. Thank you so much.